Good evening, viewers. This is Dimapur 24/7 live, and then today we have a live introduction with a renowned social activist, a social worker. I personally take him as a youth icon, Mr. Akavi and Zimomi. So, good evening, sir. Good evening, sir. How are you? I'm fine. First of all, thanks to you for giving us your time and accepting us to take your interview. So let's start the discussion, sir. First question I'll put to you is that as the whole world is facing this pandemic, the coronavirus, and it's creating havoc, and it has hit our Nagaland also, our state also. How do you see, sir, currently our government, how is it handling the situation, sir? Let me take a second comment. Comment of knowledge. Yes, sir. Yes, sir. Asking about it. Anyway, first of all, I would like to give thanks to God for giving us this opportunity to let us sit together and have an honor to have an interaction, live interaction with the officials from the Dimapur 24/7. And thank you so much, the founding members of Dimapur 24/7. This will be the second opportunity for me to present myself to have an interaction, live interview with your members. And as you have pointed out, with regarding to the question about the government of Nagaland, how is it functioning, right? Yes, sir. Would you like me to speak in Nagamese or in English? Sir, whichever language you prefer. Hindi, English, Nagamese, कुछ भी चलेगा. Your choice, sir. अपना कुछ है. In the point of a public of Nagaland, what I would suggest is that, as we have been observing for the past nearly 2.5 months, this is the third month that we have been running. Yeah. The lockdown, national lockdown, was called by Narendra Modi government on 25th of March 2020. Yes, sir. So today is 2nd of June 2020, Sure. and I feel that government of Nagaland is also giving their best, Sir. but still there are so many lapses, I should say. Okay. So many weaknesses, Sir. but I believe that they will continue to do their level best. Sir. And the success of the government of Nagaland work will depend upon how sacrificial the frontline workers, Sir. especially the medical fraternity, medical staff Sir. from the health and family welfare, including respective CMOs, chief medical officers team, Yes, sir. including, I should say, NHM, National Health Mission. Sir. Yes, sir. That includes the nurse, including the police officials who are in the front line, Sir. our NAP, our great NAP, Okay. including the IRP Jawans. And I feel that even the firefighters as well as the sanitation workers from different municipalities Yes, are sir. also giving their level best. Sir. And the success of the fight against this COVID-19 pandemic will depend upon how they are well equipped. Sir. And it will also depend upon how the government of Nagaland not only sanction enough of economic packages, including the facilities provided not only for the quarantine facilities, but the government of Nagaland should also make sure that our frontline workers are given the best of the best facilities, including Of course. sufficient TA, DA, including allowances, and including health insurances in case of course. unfortunate incidences that might take place Yeah. during the course in the fight against this COVID-19 pandemic. So we feel that they are giving the best, but still a very long way to go. You mean to say like they can give more? Yes. They can give more. Okay. And yeah, please continue. Yes, please, sir. I will come back to the separate. Okay. So, but there are lots of people, there are lots of views that many are believing that the government is doing good enough, and then people are just criticizing them. Not you, of course, not you. It's not about any political talks, but people are saying that no, they are trying their level best. They are doing good. But that is your view. Okay, accepted, sir. If I have to ask you, अगर मैं अपने के खुदी ले कि like especially मोहल्ला students kan bahar ba ana kan ke. Itu sir, in just a simple short word, itu bahar ba students kan phasi na thakan ke ani wo return. Itu plan banaise aru ana bhi shuru hoise etia to. Was this decision a correct one, a good one or not? Like in a short words, if you have to say. Okay, that's a very
good tricky question, I should say. And it's a very good question. Sir. See, since the question itself is relevant and it involves the Naga society, Sir. Nagaland society, I should say. And there was so much panic in Nagaland due to this, whether they should be brought back to Nagaland or not. Yes, sir. So I will just reply it in Naganese. Yeah, Because of I course. believe that the viewers will be. I believe that this video should also reach to the grassroots. Yes, sir. আমি sir by খুদিয়া তো আমি একটা জবাব দিবলৈ মন থাকাটো হয় সব মানুহ এটো কোভিড-19 আচানক প্ৰবল পেন্ডেমিক WHO পৰা ডিক্লেয়াৰ কৰি কিনা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন পৰা ডিক্লেয়াৰ কৰি কিনা এটো পেন্ডেমিক থাকা কাৰণে ভাইরাস কন্টিজিয়াস হৈ কিনা একজন বা একজন লাগিব না ড্রপলেটস গবরাবলে খাসি পৰা বি লাগি যায় স্নিজিং পৰা বি লাগি যায় না এটো টাইম দিয়ে আমি কাটো নাগালেণ্ডটো লিটারেসি রেট বেশি হাই আসলে বি আমি কাটো কি হইছে না জানো বি প্যানিক হইছে বলে রুমার্স কাটো বেশি স্প্রেড হয়ে যায় কারণ আমি কান বস্তি দিবি এটো ভুই খা বেশি হই যাচ্ছে বলে বি কোনবা কইছে আহিব লাগে নাহিব লাগে কয় বলে বি আমি কান অন হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড বলে মন থাকা দো আর আমি কাটো নাগালেন্ড ইসো মরম ব্রাদো every community every religion আসলে বি majority of our population they believe in Christianity. Yes, sir. So Christianity la hasab to kojla ami khan na enjoy manu ke embrace ko hai aru moi kole mon dhaga to ami khan figure to 10-15,000 ko kitaba 20,000 hoti jay kitaba 30,000 hoti jay hole bi itu para bi aru beshi ase Nagaland de bahar dhaga khan to Acha. ami ke kwa to aji just 2 hours back ami kunba student union Bangalore de hodise to ta khan ba to around 15 to 20,000 ek lakh de Acha. 1000 kwa no hoide 15,000 बाल होइना 20,000 तक नागा मनु इते बाहर के बोइना से अच्छा खाली नागा सब नागालैंड को आसे बेंगलोर डे खाली बेंगलोर डे खाली बेंगलोर डे बोले बे ताते अप्लाई करा मान तो आही बोले थाका कान तो हार्डली 2,000 3,000 एकला आही बोले से नागालैंड अच्छा अच्छा आज तो ता कम 7 बजे दे एतो तो अराउंड 6-7 o'clock हो जाए बेंगलोर बा तकन 80 बस दिगे ना BMPP गवर्नमेंट नागालैंड बा कोऑर्डिनेट करना स्टूडेंट खान कोऑर्डिनेट करना तकन इतो बसेस 80 बसेस पर तकन ट्रेन स्टेशन ते पहुंचाइसे 15-20 मिनट्स जर्नी और नारो जाइसे आइसे गुना आहा दिन 1600 मानो आइ होला से नागालैंड सो गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड बा पॉलिसी बनाइ गेना तकन भी नोटिस तो बेसी दिरि आइसे इतो बिदरदे आमी नाम तो नको बोले बे सिविल सोसाइटी कान तो नाहिबी कोआबी इनडायरेक्टली कोआबी থাকিছে बोले बे इतो कान तो हैपन होय कुन होय ने इतो तो आमी खान ता खान की भी ब्लेम करा न होय होले बे ताई खान तो आमी खान ना बचा से दे बाहर लगा खान तो बिया होले बे बाल होले बे 100 होले बे एकता होले बे दुईता होले बे 30,000 प्लस थाका तो आमी खान ना बचा से आमी खान बाहर दे बोई जाबी बोली तो ना इंसिडेंट एकता सिंपल को बा मी लास्ट मंथ কোনবা চুবৰি তো মৰিছে আৰু বেছি হালা গোলাবি কৰি ইমোশনাল আউটবাৰ্ষ্ট থাকছে কোনবা তো কই আইব নাইব লাগো হলেবি ইসোর মনবা তা কানা ডেড বডি তো নাখালিন পঞ্চি আছে সো আজি তো মানুলা ফ্যামিলি তে ইটো কাম মৰিছে না and we pay our solidarity আমি কানা sympathy বি আছে on behalf of the people of Nagaland আৰু our deepest condolences to all the bereaved families see আৰু কোন ডেড বডি আনিবলে পাৰা নাই out of topic jai jai হয় নাই নাই কোনে ঠিক আছে আমি গান ইটো বি solidarity আছে আৰু কোন আইন বুলি পাৰছে ইটো খান গিবি তাই খান ফ্যামিলি গিবি solidarity তো ইটো ইজনা আমি খানলা করোনা ভাইরাস deadly world to the increase আছে আজিলা 24 hours till up to this morning I came across that India the corona virus increase how to in a single day 8,000 cases increase yes hoy so predictable unpredictable আছে কিতে বিমার হৈ যাব কিতে মানুহ মর যাব না জানে so we cannot afford to see our children dying in other states, dying in foreign land. So the best decision that the government of Nagaland though they have taken it very late. That was the best decision to invite and to give a notification. Official notification dikena bahar di thaga kan to ahibo lage te bolkina aha to eta ana to beshi khushi pase. Aro tade ami kan government of Nagaland di try korase holibi I believe that again they should give their best without giving up. Of course. And I believe that 79 crores na 79 point if I am not mistaken 79.21 crores to 28 May de nisku bode kuma nisku bode olagena government of Nagaland ba has to spend crores so that is a very less amount that the government of Nagaland has spent yes aro ami vishwas ase 2 months bidar to khali 79 crores spend kora to beshi kumti ase kokleman alag state to ami to state logo bolbe they are spending around crores of rupees thousands of crores of rupees only
crores of rupees in a single day to feed the homeless. Yes. So I believe that government of Nagaland, yes, they are facing problem with financial crunch or financial crisis be face was due to the lockdown. But if sufficient amount of money pumping possible, field workers be that can be mon damur kurna kam korbo. That can give they are hola hole be kumti di thakibo. Not to sufficient be field workers can that can come korase. That can be that family sabo lage na. Our unseen expenditures to be show like. So it is na feel from line workers can give it lage. Or sufficient ki requirement ase PPE pa logina, hand gloves pa logina, masks pa logina, surgical masks pa logina, sanitizer pa logina, N95 masks pa logina इतना तो sufficient दिवो लगे. So ये तो अपनी पढ़ा क्यों डिसीजन क्वेश्चन. मतलब जो डिसीजन किने आसी तो आना ला तो अपनी मुझे आंसर डिसीजन. That was a very wise decision. Wise. अब कौन कोई इतो kan दाई नहीं कोई ना. हाँ. ताई kan भी Facebook पे social media था आजकल तो social media education बिसी जाए तो. Medium of information. Yes. So this पे बोल भी information वाला है क्या आजकल social media ने पता हो रहा है. जी. So itu kan social media ला trend आसे complain kan बिसी कोआ kan gitu आमी kan kali follow keras ना आमी kan आमी उसे active social media blogger. Yeah, I know. Yes, sir. So yes, sir. ताई kan भी itu realize है ना आमी kan naga manu bahar deh naga kan aha itu ভালো হইছে ভাল ডিসিশন আছে এটো পজিটিভলি কোয়াছে সো বাহারে থাকা মানবি এটো মন চিন্তা নকরব লাগে আমি কামটো আপনি খালা ফ্যামিলি মেম্বার্স কাম নলে আপনি কানা স্টেট কামটো আপনি কামকে লবলি মন্দাই ওয়েলকাম করবলি মন্দাই এটো নকব লাগে ওকে সো ইতিয়া আপনি লাগা জবাব পৰা এটো মই বুজিছে কি it's a very wise decision tan kane bole to অলপ late pra luise matle অলপ very late pra luise apni koise the same measures which they are taking now special trains or special buses itu puila pra kodile to or beshi safe hobo thaki. Okay, fine, thank you sir. Okay, one more thing I would like to ask you sir, though I have followed you very nicely apni ki beshi follow kore moi and apni I think you are very much concerned about jobs in Nagaland and then you are actually concerned apni to nijor laga bhai boni ge বেশি মরম থাকা নাগা বাচ্চা খানকে নিজরা বাচ্চা খানকে আপনি তাহাঙ্গানে বেশি কনসার্ন তো আপনারা একটা মই পোস্ট চাই চাহ তো সাপোজ তাহানি দিয়া বাহারে কাম করে আছে বেশি ভক্ত এতে খান কাম না পাবা যাইছি বাহারে চলো ইতো তো হোগে ইতিয়া সাপোজ তাহানে না প্যান্ডেমিক টাইম যে রিটার্ন তো আহি যায় আছে এন্ড সাপোজ কালি সব মরম ইতো সব বেমারটো যাই দিছে প্রবলেম সলভ হলে বি বেশি বা খান তো আর তো ওয়াপাস যাবলে মন না থাকা হয়ে যাব এনে ইয়াতে হি করেও মন যাব বেশিরভাগ তাহান ब्यूटिशियंस ता काम करे कॉल सेंटर्स से काम करा हान स्मार्ट बिशी स्मार्ट खाना से ना काम बाहर तो तहान सपोज यदि बुई जाओ मुन जाए से तान यदि ही काम करना नहीं नागालैंड बुई जाओ मुन जाए से तो ऑन दैट टॉपिक बिकॉज जॉब्स आर वेरी लेस इन नागालैंड आई एम सॉरी इफ आई एम सेइंग दैट सो ऑन दैट व्यू व्हाट इज योर व्यू सर आपने की को मुन जाओ एंड लाइक जॉब्स खान तान यदि करना बुई को लिवी किने की ते फोकस करो लगे see our population Nagaland though the census was taken in 2011, official census from the government of Nagaland. Sir. Our government is yet to take a census, but different data, different assessment again. Newspaper devi data kan alak alak social media devi kumba koi 19 lakhs aso koi kumba 20 lakhs aso koi just take example rough figure. Yes sir. 21 to 25 lakhs. Acha. Nagaland population approx. And Dimapur population will hardly be around not more than 5 lakhs if I am not mistaken. Yes sir. So Dimapur population 5 lakhs bidder devi at a cosmopolitan city ko gina amikan Dimapur to out of 12 district na out of 12 district 11 district actually be ekta officially at korina ito 12 district ko sido so noklak laga gina noklak so ami ko bole man dakha to hoy unfortunate hoy gina etia amikan pandemic hoy gina khali to Nagaland la issue plan hoy de ito migrant ko sikle amikan Nagaland na manu bahar de boy je sikle ito ke be migrant workers we consider ourselves like amikan to indigenous aso ko Nagaland de boy sikle indigenous non indigenous so like similarly amikan la bacha kan etia rough figure just take it example 35,000 per you know 40,000 bahar de aso ko kam kore ase before the lockdown okay so 10,000 hole be Nagaland de wapas ai sikle it is going to be a big challenging task for not only the government of Nagaland, especially our Honorable Chief Minister and his cabinet colleagues, including the administrative lines, like that includes our Chief Secretary. Yes. So this is going to be a very challenging task for every one of us. Yes. Including the civil societies, including the church societies, church associations, including the business communities, the private sector. That includes underground. Okay. Underground ka to bed sense no lagi only to the existing factor as na because to undeniable fact ase so like moi ko man thaka to
কিলে ইটো আমি খান দিয়ে হ্যাম্পার করবি না এফেক্ট হবলে আছে বলে জব লসেস থাকিব তাই এখন বাহার দি বইনা কাম করবি আছে কুম্বা তো 30,000 কমাই করছে কুম্বা তো 10,000 কমাই করছে না কুম্বা তো 25,000 কমাই করছে because we keep on dealing, we keep on interacting with our youths, as you have clearly mentioned. It's like and maybe in your life as a we are more into youths, we are more into connecting with youths in different states, not because to get fame or maybe popularity, but we have concern. Just like me, there are hundreds and thousands of our leaders, youth leaders, including the church leaders, civil society leaders, who are directly in touch with our children who are outside of the state. Yes, sir. And that's how, similarly, we give them guidance, we give them counseling, we get to know about the problems, we get to know, interact, and we make friends at the same time. We give them the formulas and the solution, what to do, what not to do. Yes. News ahi jai. So, moi gobole mon thaga to, ete tai khanla economic policy de abode. Sir. So, itu আমি এখন গভর্নমেন্ট অফ নাগাল্যান্ড থেকে এতে SLC or SSC কোনে এটো ডিক্লেয়ার করবে আছে হয় and the good thing is আমি নাগাল্যান্ড তো this time to be last time is not right, previous years is not right, this time is very less government schools can be এটো রিপোর্ট ভালো আছে বেশি ভালো না আছে তো জিরো রিজাল্ট বাদ বেশি কমতে আছে দিস so class 10 12 BA every year graduate has lo. So graduate has na unemployment law rate bhi uthe ase. Government law official report pe ek zamana 2 years back to around 60-70,000 unemployed registered ase. Ita definitely uthe. Unemployment office koise na. To tade kotha ami kotha example. Ami social worker asle be আমি গভর্নমেন্ট জব হোল্ডার নজিবলে আই এম অলসো কনসিডারড এজ আনএমপ্লয়েড ইয়েস স্যার আমি বিজনেস কোড আগে কি করলে আমি গভর্নমেন্ট জব নজিবলে আনএমপ্লয়েড ক্যাটাগরি টু বসে যাইবো নি আমি ডাইরেক্টলি আছে নাগাল্যান্ডে unemployed কোশিবলে ড্রপ আউটস কোন যায় যাবো দে হয় থেলোজি পুরা মানবি তাদিকে বসিবো হয় তাদি ওপরে ক্লাস 10 পাস হইনা বাহারে কাম কুম্বা তো अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी न बनाएगा सीधा जाए ना अब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लास्ट सैटरडे देता है श्रीनिफिर और डिक्लेयर कुछ those Nagaland citizens who wanted to go outside of the state of Nagaland should compulsorily register themselves under the government of Nagaland. Achha. That is a very wise decision. Good decision. Very late. But the government of Nagaland should not only implement it in paper. Okay. Newspaper dekla implement no lagi de. Actions tebe ho lagi. Then only people will regard the government of Nagaland. Then only people will appreciate our honorable chief minister of Nagaland. De. So my unemployment rate kya asule there will be more lakhs. Yeah. लेक्स पर भी विषय हो अच्छा सो एते नागालैंड दे थागा मानु भी अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर दे प्रॉब्लम फेस आए ना थागा दे 20,000 होले भी नागालैंड दे वापस आए शुगले 10,000 होले भी वापस आए शुगले आरो बेसी यू सब गोना गेट फ्रस्ट्रेटेड यस कम ना पाबो दिमागपुर एते कॉस्मोपॉलिटन सिटी आसे अराउंड 3,000 इतना नागा माने एम्प्लॉय करना आसे शॉप्स काम दे আমি এসো ক্যালকুলেশন করি আচ্ছা 2,500 পাবো না 3,000 এমপ্লয় করনা আছে শপিং মলস লাইক বিগ বাজার বিরাট না নলে তো এতো বিশাল মার্কেট indigenous fast way hoy sir to আমি তো ইন্ডাস্ট্রি भी मन নাই ইন্ডাস্ট্রি নাই না সো লাইক আমি তো ইনিকা করা দাম দে কত এমপ্লয়মেন্ট দিও আর এতে কাম করা মানবি 4,000 5,000 পাসে না আর মালিক তোরা বাত না খেলালি ছাতে খেলায় শপিং বলতে না দোকান খান দিবি তো ইমান ভালকে থাকা কান আহা কান তো কি করব so it's going to be a big challenge it is going to be a big challenging task and another factor we have to understand is it's a pandemic hoise we never know that the pandemic will go for 1 year or 2 years yes World Health Organization be there confused our respected leader of the United States of America Donald Trump just recently 2-3 days back World Health Organization la funding bond kar dise na hoy तो এটা তো World Health Organization भी এটা तो confused हो जाए कि vaccine develop करबो ना develop भी करबो ना पारे ना वासे Russia is saying that they have developed vaccine Italy is saying that they have developed the vaccine Swiss they have said that they have developed the vaccine Israel भी develop करছে কোনো আছে আমেরিকা भी develop করা আছে বুঝি অস্ট্রেলিয়া भी same thing না এটা भी কোতে আছে নাই তো আর এটা প্র্যাকটিক্যাল UK ইউনাইটেড কিংডম भी করছে কোনো আছে মানে এটা টেস্টিং করা আছে এটা 100% রেজাল্ট হলো না তো so inegala fear psychosis te na inegala fear psychosis te people will be reluctant yes sir people will be adamant to go back to their own cosmopolitan cities to work yes sir and we have to understand that those who are coming back from other cities back to Nagaland IT sector pa man hai bode hoy ilaban call center nole BPO nole tech services এখন দিন এফেক্ট নাই তাইতে লকডাউন থাকিবে না থাকিবে বোর্ডে বই কিনা এখন ফোন কল সেন্টার পাবি বড়াই কিনা এখন পয়সা কামায় তো স্যালারি তো এফেক্ট নকরে but the people those who are getting affected is from the parlor
including it's very bad to say Baspa, Yeah. hotel management, Restaurants. housekeeping, restaurants, security guards. Yes. For my area itself, there are so many dropouts and class 12 pass out students who have gone out of metropolitan cities to work in the security guard sector. So this is going to be a very challenging task. This is going to be a very challenging task. So bahar ba aha khan be olop lamba koi dia asale be bahar ba aha khan be na bahar ba aha khan be Hi sir. state government do economic policy banao. Hi. আমি একটা গভর্নমেন্ট ধরো সাফা সাই এক কই কিনা আছে আচ্ছা সাফা সাই এক তো কি আছে বলে তাতে লোন না আমি খান তো সাফা সাই এক তো রিএমেন্ট করে কিনা আমি খান লোন খান ব্যাংক খান তো নাগালেন্ড মানুষ খান কে লোন দাদে দিমান আনএমপ্লয়েড খান কে হয় হুই খাই হয় পয়সা ললে কিনা পয়সা না দেরা তো মাটি মর্টগেজ করে দিব বলে আমি খান আর্টিকেল 371 এ আছে না মর্টগেজ করব না পারা হয় customary law so it was surface different political parties including NPF Congress as well as some different organizations associations have written of Nagaland and the government of Nagaland asking them to implement and to re-amend the Surface Act so Surface Act কি আছে বলে আমি নাগা বানাছে আমি লোন লইছি বলে না bank has the Indian Act আছে today bank has the authority has the power to take my land and your that property is if I'm not able to pay the loan. Mortgage, defaulter. So, Article 371 एक रही है अमेरिका तो local government bank kan. तो अलग state तो असम तो इतने अमेरिका में नया state ऐसे इतने बड़ा अमी इतने वहाँ बड़ा इतने नागालैंड के जैसे तो 2 kilometers की था तो. होई तो सर. नहीं ताकन तो लोन पास हो. होई तो. And so लोन पास हो ले इतने बड़ा ताकन interest rate तो खाता bank kan अलग अलग interest rate देखो बात 12% interest rate per annum का से 12 months से 1 lakh logically they have to pay only 12,000. Yes sir. बेशी कम 14% कर ले 14,000 का पे करो. मतलब अगर हम लोन ना पाए इंडिविजुअल लोन लो ना तो दादे इंडिविजुअल लोन देखिए उसके मंथली दे अभी दिन इंडिविजुअल दे 10% उसके 1 लाख के दे अभी हम दिख मंथ रहे 1,20,000 दे रहा हो लगे. But whereas if we take loan in the bank we have to pay only 12,000. So who is benefiting? And these are all central schemes. Sir. And these are all under the purview of the national policy. Sir. So, if other states are getting the opportunities and availing the opportunities, I think it's time the government of Nagaland should also re-amend the Surface Act. Okay, sir. Surface Act implement करके ना economic policy revive करवा लगे Nagaland में. जितने economic policy revive करे, state government भी tax पाए. अच्छा. Revenue आहे. National central leaders खान भी central government भी tax पाओ. In the form of GST. कदा अभी तो मोबाइल किनছে ना 10,000 पर मोबाइल किनছে बोले जीएसटी तो फ्लक्चुएट হয় কত কথা 18% আছে কবি তো 1,800 to tax দিয়েছে তো গভর্নমেন্ট কে তো তাতে CST কইছে বলে তো সেন্ট্রাল সার্ভিস ট্যাক্স না তাতে 900 rupees to central পকেটে যাব তো আর 900 rupees to state government না GST করে তাতে বুঝিব. But I'm not a commerce student, so commerce student will know more about this. But yes, so, but it fluctuates. It fluctuates. Yes. So what I mean to say is that government should come up with an economic policy. Okay. Better economic policy where a separate committee should be set up. Okay. Separate committee should be set up. To look after that. Hey, at the COVID-19 committee ko gina high power committee ko gina aji paper to lagna sito. Nifir oba chairman ho gina. Amala same bra. Itu is na committee ekta set up korbo lage. तो economic policy revive करले क्लेमन CMD सब लगा देता है. Though he is holding the in charge of finance portfolio, he will be able to look in every aspect. Yes. So a separate gazetted officer in the rank of IAS officer should be empowered to look after this empowered committee where policy can also be amended. Cleman 14 days quarantine picture to no to kumba 28 days quarantine thakbo 14 days government institutional quarantine thakap site enjoy bosti da 14 days 28 days and people will keep on coming, so government has to formulate some policies, economic policies where after maybe 1 month or maybe 2 months with the help of different bank institutions, government can also come up with policies where our youth will be benefited. Yes, sir. And when they benefit, our youth are benefited, automatically the economy of the state will be revived. Right. Yes. And when the economy of the state will be revived, there will be no clashes of snatching away one's own power. Yes. Dimapur take over example. Cosmopolitan asukuna kohima manubi kiteba hai na. Fake manubi kiteba hai ja. Manubi business karani. So Dimapur te all focus korle to be dishima. Alag state. And we should not forget that
অলপ লম্বা কৰি দিয়া হয় নাই ঠিক আছে স্যার 16,579 square kilometer Nagaland capacity. হয় area আমি খালে area. হয় Example, take an example of Dubai. It's just around 3,800 square kilometer area আছে Dubai capacity. So Eastern Nagaland 4 state. Tuensang, Longland, 4 districts yes Tuensang Longland, Mon and I forgot Kipri, Kipri. including Nopla. yes Pasta district Melalibi area to more than 5,000 square kilometer. ওলাই আছে Dubai is 3,000 square kilometer area the desert area ke convert korina world economic trade center banabole parchukle na leaders come by visionary thakina banashikle kind of Nagaland has got very rich in flora and fauna. Minerals are there. Good thing is minerals are also there. Yes. But our roads are directly connecting to the Southeast Asian countries Sir. like Burma, Thailand. yes sir Seaports are also already being constructed in areas like Peg, I forgot Gaminti and all these things. yes sir So these areas, this is the right time. I should say this is the right time where our people coming from other states, like there will be expertise. Sir. Just 2 days back, I had an interaction with some of the Sprangis who came back from Rajasthan and Chennai. sir From their interaction, brother, I am looking at them. Ekdom mon chinta hoigina phone grasa to. I mean, to Nagaland में वापस आए हैं, ऐसे तो काम भी नहीं, की करो लेसना तो क्या है कुछ, किले कोई खास है अपने, ना, किले कोई खास है, आदमी का ना दिमाग तो दिखे ना स्टेट गवर्नमेंट दिखे, चोर करोल दिखे, अच्छा और तो दिमाग चोर करोल से ताकि हम ना जो बकित ना ask them and compel them to use their दिमाग and implement it and create job opportunities and create opportunities. बाहर का तो expertise का निकला है बोला some will be very good in fashion designing, some will be very good in this home designing and all these things, some are already involved in hospitality, some are already involved in travel agency and all these things, some are already involved in the IT sector. Through them, government of Nagaland should identify them and bring IT sectors like BPO sectors like call center भी दिमाग पर भी दिता दिता पैसे सब बोनो so I mean sustainable ना long term itu bagi kita perlu lagi ना so our one request will be those who will be involved in all these things with the help and support of the government of Nagaland, they should also make sure that एक बार invest करो बेसी कमाओ लगे itu ना भाई अच्छा ना अरे starting to loss हो मारे loss होने भी give up न करो ना itu idea policy चला ना expertise जरे ना itu kan करो लगे. And government of Nagaland has also certain schemes like JLG को किना से Joint Liability Group itu cooperative societies bank like Nagaland Cooperative Bank itu kan pada और कुम्बा banks kan deh recommend करो ना so itu kan implement subsidized rate पर pada कुम्बा तो 37% subsidy by कुम्बा 33% subsidy by 1 mark पास ले subsidized rate पर itu kan pada so itu kan खाली rich माने एक ला ना नोले थका माने एक ला recommend करो ना नापान होई ना नोले कुम्बा leader civil society leaders नोले village headmen करना बाजा करना एक ला नोले please don't take it in an offend way of course और भी itu bahar करके identify करना itu कोसा करना और itu grand road बस्ती मानू कमरा खान पर भी grand road એટલે মানে তাই করে economic sustainability থাকলে বস্তি দেবি benefit পায় church দেবি 10% আইবো না তো তাই কিটা job opportunity দে business তে involve করব তাই छोकरा का से तास खान ना किलो चोर लोकल दावे ना खाबो मधु ना खाबो अब कुमा तो गुसा परा अनुराम देबी गुसी जाबो ना तो अनुराम देबी एते आमी खान तो नागा political issue तो सब नकरो ना बासे so आरो तुम हेदे गबो so these are some of the problems that are coming up which I can see and which you are also seeing yes and which the viewers are also seeing it yes. So I think it's time the government of Nagaland take it very seriously because our focus and our intention every one of the Nagaland citizens I mean our focus tiki hoshile खाली coronavirus pandemic ना आज लाइक तो 49 केस हो गया ना से लेटेस्ट ला कॉस्ट दे कल तक तो 43 तक से दिमापुर ला 31 केस हो गया ना से कोहिमा ला 13 केस हो गया ना से मिला ना कि फिर तो इंसान में तो 5 केस हो गया ना से ना तो আমি দেখিলে বাস বলে করোনা ভাইরাস তো পুরো ঘুরে যাচ্ছে তো whereas other developmental activities are already taking place no so we should not ignore other aspects yes sir. So I think I have spoken so much these are the things that I want to say. I would like to say अपनी लगा इतना ভাল लगा तो मुझे I hope I'm not speaking fast no you're clear enough the viewers are understanding and they're liking it the comments are coming the good part in like the good point in you is like apni kotha koa do apni to criticize kora noi na you are giving good ideas only you are giving reformative ideas constructive ideas only that bahar pra students khan aha kaam kora na aha khan
they are expertise in their own fields. Yes, yes. তাহান কে লুইনা মহান স্টেট ডেভেলপমেন্ট বি যাব পারে ডিফারেন্ট আইডিয়াস বিকজ মহান ট্যালেন্ট থাকিলে তো বাহার কোম্পানি খান ডেফিনেটলি আইব তো বিপিওস আইব বিপ্রো বিপিও কি কি ডাঙৰ কোম্পানি খান আইব Oyo, we have one Oyo in of course na big restaurants will come, big malls will come, and they will give jobs to our people. And when they get jobs, they pay tax, and ultimately the state develops. Good idea, sir. Thank you so much. And ভাল লাগিছে মই আপনি ইমান Hey, I'll supplement your point. sir. You have said that you are not criticizing the government. Yes. If I had the intention to criticize the government, I can make a very long list to criticize the government for the past 15 years. Sir. But I mean, key seriousness ekta ase bole criticize bhi korle pare. No problem. Hoy. But the problem is what I'm very much worried is those Nagaland people who will be coming back to Nagaland. They already for 5,000 manu to ahina ase. Inter district notice para milai ke ate bahar ba ahina Chennai pa ahina Haryana pa ahina na Chennai pa if I'm not mistaken 1,100 something they came back to Nagaland on 23. Kolkata they 23 they takan 21 they move korse na. Aro 21 they move kora to May they move kora to 23 they punchi je. I had to talk with some of my friends who came to Kolkata. So Bangalore da aje takan 1,600 have la said that 5 June they punchi bola ase na. To criticize ko bole be ishas long list na. Hole be the intention kya ase bole criticize bhi korule pare no problem na. Hole be kya ase bole ete kimi ka kurugina itu kan bahade dhaka kan nalinde punchi. Kimi ka kurune itu kan ahab chede state telo ino problem no hoga lage. Kimi ka ahab chede economic revivality bhi thagibo lage. Aro Nagaland I mean being a citizen of Dimapur district cosmopolitan state cosmopolitan district I mean hantu communities kan bisa ase Dimapur de like 11 to 15 non-Naga communities like that includes Marwari, Jain, Bihari, Bhojpuri, Gurkhas. Now Gurkhas have a very good population of around 25 to 30,000 population in Dimapur itself. Sorry, Bengalis. They have a population of around 60,000 population in Dimapur itself. Your figures are very good. No, I interact with many Yes, sir. civil society leaders, including non-Naga communities. Yes, sir. So it's my duty to have the information. Good. This is not in my fingertips, but we have it in our brain. Good, sir. So this is for the information of the Naga public. People say that Naga Manu Goina. Nagaland has got ample of opportunities where we can create sufficient jobs. Sir. If we put our brain, if Yes, we sir. use our common sense, if we use our mind. Expertise comes to us today. Hoy. If Delhi can accommodate crores and crores of population, migrant workers from other states, including the Naga population, around 1 to 2 lakhs population, entire Naga notice Naga Manu, Delhi te Rajuli particularly, what's the big deal for us to accommodate our non-Naga communities in Nagaland? Itu buji bola kan kan. Walaupun ekta issue lah sila Naga issue lah non-Naga issue lah. Walaupun mau kalau mana last time kami non-Naga leaders kan lagi bahas nanti juga sih. Kami kan boda emotional hoda sih na. Kami kan backfire ho emotional lagi na ikut. No hobo. तो क्या होगा इसलिए अपने हम नॉन नागा खान भी अपने हम तो एक्सपर्ट खान भी था क्या ना नागालैंड बोर्ड ऑफ बोलना अपने हम भी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन पावन भी ऐसे कुछ बात they are working big companies, they are working big hospitals like AIMS, related to AIMS. Yes, sir. They are working expertise in cancer, they are expertise in different deadly diseases. Yes, sir. Some are doing accounting jobs, working as IAS officers who have passed out from Nagaland, our non-Naga friends, so they are non-Naga community, and we respect the contributions. So itu kami kau non-Naga community leaders kan भी दिमाग लगाएंगे ना आमी kan ना job industry लगी ना है ना job industry के लिए ना दिमाग लगाएंगे ना है ना तो आमी kan Naga मानो indigenous kan ना दिमाग भी क्लाचा पूर्ण आमी ना कोनो prosperity economic prosperity बनाने लगे Nagaland तो इनका जो non-Naga था भी आमी kan government job के ना government job हिसाब ना तकाओ जब government job ते काम कर ले discourage करा लान होए बोले भी 1 month completely काम कर टाइम को 25,000 30,000 बाजी का तो आजकल मोबाइल किनले भी मन kan 30,000 का मोबाइल किने दो बच्चा kan तो 30,000 तो कमाई करके की करो ना होय फैमिली सबले बराबर चर्च सबले बराबर भी we have to look into the aspects of business business ते सब लगे আমি দেখলে দুবাই লা एग्जांपल দিছে কুয়েত লা एग्जांपल दिसे they are more into business so we have to use the minds of the non-Naga brothers and respect them at the same time the non-Naga brothers should also not be selfish लगे ना आमी खान दिमाग दिबो लागे तो ये दिमाग किने क्लास सब करे ना पॉजिटिव नेगेटिव आमी खान वार जॉइन करसिले आपुन होय तो इतु जिना करबो लागे आमी इतु करसिले आमी खान
economic prosperity থাকিব আৰু employment opportunities বি বেছি generate হ'ব so Nagaland 20 lakhs population থাকাটো না আমি কব আপনি গান বি ভাবি থাকিব আমি গান কিতে তো horizon তো এলা expand কৰিব না border sales বা গান দিমাগ লগাইলে মিলিকিনা কাম কৰিলে 20 lakhs population ছাড়িবি না 30 lakhs population হলে বি বাহার বা 10 লাখ আনবি তো কাম দিবলে না পারা যাব একটা বন্ধ দিলাস তে দুইটা তিনটা কাম করবলে শুরু হয়ে যাব opportunity singa হলো তো so but unfortunate but I believe that things will go right and I believe that the young minds who have come back from other states to Nagaland they will not just stay idly they will put their heads and they will put their minds to do something greater for the economic prosperity and kite economic prosperity hai ade social responsibility bhi smart tik tak hai jai aur kite ki hoy jai na social responsibility tik tak thakile ami kan moral bhi boost hoy moral bhi bhalo hoy kite tik hoy religion factor dibe ami kan to church kan manu kan donation mangule kam hai na I'm so sorry for using the word church but church la expect ekla hoy na ami kan masjid bhi ase temples bhi ase noile jen khan ki koi gurudwara bhi ase punjabi kan na to ami kan church te bhi to moral every religion expect positive growth thakbo to okay sir there you have I personally will say this you have water apna interview to manuhan ভাল লাগে আছে অলরেডি মই বেশি ভাল লাগে আছে and your figures are so good you have done your homework so nicely and আপনি কথা কোয়া দেনে হাওয়াতে কথা কোয়া না মান ভালো কথা কইছে আপনি some more topics to talk with you sir can I ask you a question itiala situation de like the non governmental organizations which includes the churches the civil hos the student bodies or the NGOs it also milaina contribute kori ase mohan government ke help lo try kori ase kon baba jaga pra every community I think every different types of NGOs tahan manu ke bhat khilai ase quarantine center to help kore ase everywhere na so on this topic on this NGOs all the churches all the civil hosts how they are performing on that topic apni ki go mun jay tahan kena kore ase idula topic koise bole to beshi bas ase apni short take bol I'm not taking much time apni ene short take tahan kena is it commendable or not like I should say it's a very commendable job commendable job okay kile commendable ase bole even me myself I'm involved in one of the organization known as International Human Rights Council ipali face korna ba taka ba nila face digle hoise International Human Rights Council goina which is affiliated to United Nations with the status of ECOSOC economic and social status they have entrusted me to be the president of Nagaland state wow so ami khan na chharibi na but first hand information witness asde Sikh community khan mote ami kan tie up korina aro tai khan ekla para ekla itu lockdown period nearly 40 days before they feed around 10,000 families by giving them rice some they gave 5 kg rice Russian alu potato banda gobi tomato sab dali kena disi to acha so itu jina bangali community khan bhi korche na itu jina association youth clubs choto colony de bangali bonds koi nole ete just take an example Dimapur 24/7 amila also de base apni han de ete feeding kora je every day 7 o'clock de homeless kan ge feeding kora je Dimapur street and I appreciate and I salute you for all these things thank you sir thank you same thing Marwari Samaj they also did the same thing sir including our Naga tribes yes 17 recognized tribes of Nagaland Ao Sema Angami Lotha Chakasang Kemungam Konya na tade Pochori na tade Lotha na ami sob kubul na parle be to sob manu kora ase to aite example Livingstone de WSB ke Western Simi public charges issue gogina ta kan Livingstone kan ode type korno government of Nagaland ode coordinate korna district task force Dimapur kan ode coordinate korna very well bishi bhalo cholai the best facilities bishi bhalo cholai is tan and today I came across some WhatsApp group where khub hote area public khan pa chawal khan ki donation dise they WSB they are also doing their level best yes similarly our churches they have adopted Dimapur Government College where they are reading and they are giving their best with lots of contributions lakhs and lakhs of rupees sir and in other districts like
Konyak Union, they have contributed around 1 lakh something like that Yes. to every district, to Dimapur district. Yes. So, every community, including our Nagaland, is very good in one way, land of NGOs and associations. So, every community, every NGOs and every association, I mean, we don't have to get offended by saying that. Proudly, I'm saying that. Of course, sir. We take it in a positive way. Yes, sir. So, what we do is that everyone is contributing, everyone is giving the best in the best possible way. Same thing, coming back to your question, first question. Now, Yeah. coming back to your first question, which you have asked in the beginning, Yes. state government to tunga kura say success one bhayeko chha to. Hoy. To state government na success story to etu civil society NGOs kam para kora garne asu to. Example, हामी खान credit la no hoy. Hoy. As a human rights activist, as a human rights activist, हामी खान ke korchu bole, हामी खान 1 month hasne ke dia, if I'm not mistaken. हामी खान WhatsApp group create korna stranded kima ase every NGOs kam it was a privilege for us also. Yes. To do that. Because hoda inga privilege na ho. To stranded kam itu हामी खान alok student union every state there like Bangalore, Andaman and Diu, Andhra Pradesh, Delhi, nole Himachal, ko dekho na kundu jaga te takam problem face hose bacha kam ami khan ta khan student union coordinate korche tade different state te Nagaland dibe NGO bishi thaka jisna tade bi coordinate kora ami khan chol khan bi supply korche kuma to ami khan members pa kiba credit la no hoy ole be kuma to financially be help korche na itu issue la na ba issue ke press korne bas be itu pride kora korne ole be itu isna ami khan para bi bishi kora manu to Nagaland de bishi asu like NGO, civil society host, tribal associations like Western Singh ho, Konyak Union na, Chakasan ho, they are doing their level best and different gazetted officers union. Yes. So they are doing a very commendable job and history will remember every one of us. Even if there is no reward from art or maybe from human being, there is God. Yes. There is living God that we all trust, that we Of all course. believe. And God is going to be giving blessing to everyone in the communities, in their life, in their lives, in their generations to generations. And this is the unique thing about Nagaland. And we have to remember that Nagaland is a land of blessing. Nagaland is a land where we are very good in hospitality. Sir. So That is this so shows true. that we are all one, despite of so many challenges, despite of so many weaknesses from the government side, from the community side, from the task force side. But people of Nagaland are still keen, and it is possible only because of the cooperation and collaboration and the support of the people of Nagaland, including the CSOs and the civil societies. Sir, I would like to add something. Itu my personal mala side pra. I have lots of friends. They are in Delhi, Bangalore, Kolkata, and Chennai, anywhere, all parts of India. And tahan personally contact kore. Tahan lata students union khan lote. Tahan pra ekta khobor diya to like the name always was taken was Mr. Akavi, your name. Bishibak students khan. No, I'm saying the truth. Moi itu personal nijola figure bra koi ase. Bahar la students khan, bahar de kam korole ja khan, mala friend khan bishi ase. To tahan lo kotha kom dilo ni kina ase bole ei Akavila apna team bra ne coordinate kurna apni college na. Yate bra buhi na holi bi apni Delhi students union lote, Bangalore students union lote apni coordinate kore ase apni nijola manoge sabole apni full effect, full try kore ase to full effort hale ase. For that I salute you, sir. For that I salute you. Thank you so much. Just I hope you don't mind I'm taking your time, sir. It's okay, you can continue. Yeah. Okay. Some question. Okay, now I'll supplement your point which you have said. Sir. Apni pa ito supplement ko ato bishi things. It's an honor. But what I want to say is that Akavi ko sila mo ikla credit ko aja. But my team should be sent. Full team I'm saying. But what I'm saying is that this is a smart world, and smart world means that we have to work smart. Sir. And by working smart, it saves our time, it saves our energy, and when there is miscommunication gap, there becomes a problem. Just reflect back our memory during the past few months, during the lockdown where we have seen in other states like migrant workers, so train living our people were more informative. Not only us, not only my team, but different associations, different NGOs, different civil societies, and different tribal respective student unions, they were working 24/7, just like us. Yes, sir. So, a little picture that I can show how to clear money social media that I can use. People say that social media keep it as smart work. And that's how we are also respecting the lockdown policy.
কিলেমান গভর্নমেন্ট অফ নাগাল্যান্ড বা কত বাহারতে নলাবে কইছিল হয়। তো বাহারতে নইছিলে কাম নগরু কালন হয় এজ এ সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট এজ এ সোশ্যাল ওয়ার্কার ইটস আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি না কথা কথা আমি বাইবেল না থাকলে বে আমি খ্রিস্টান আছে না আমি ভাউরি কিনা বাইবেল কোনবা জায়গাতে রাখি যাচ্ছি তো এটা গুগল তে যাই না প্লে স্টোর তে যাই না বাইবেল NIKV কিং জেমস ভার্সন গুলো ডাউনলোড করলে দেবা বাইবেল সবগুলো পড়ো আই ক্যান মেডিটেট অন দ্য বাইবেল দিস ইজ a smart work Good point, this is sir. smart work so we have to work smart Okay. and that's how we utilize the social media to the highest platform sometimes we used to sleep at 3 o'clock sometimes we never sleep That's and fine. it's okay we don't mind sacrificing Okay, on a lighter note, in a dhamali sense, not dhamali also, in a serious note, but many of your followers, your like young brothers, sisters, they want to know that in future you are such a good leader. So in future, can we see Mr. Akavi joining politics, coming in the front? This is a light question. I think further I have to drink the water No, but in a good sense, Sudha, matlab, ito to moi ere ko political party ko government la kotha kon hoy. see I'll come back to them people say that politics to papa asugare na Acha. politics to khai sugare tenga asugare politics to kya asugare tita asugare tenga asugare bitter sour and at the same time politics is a very dirty game but in our environment in our society everywhere there is politics we cannot deny that politics to be as go like that Right. if used in a proper way if used in a proper channel politics can be used for progressive society and Of building the society building the nation and I want to see Nagaland as next Lavasa Okay. I want to see Nagaland as the next northeastern hill of Dubai Okay. আমি kan এতিয়া ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ টো কিনা কুৱেইট খান আছে নলে এতিয়া এটো কি আছে দুবাই খান আছে জিনা পাঁচনা নাগালেণ্ড দিবে আমি নর্থ ইস্ট হটস্পট বনাবে ইন্ডিয়া দিলে নেক্সট সুইজারল্যান্ড বানাবা আমি খান হয়। না হিমাচল না সিকিম না বুঝলা আমি খান নাগালেণ্ড না কিলো কবুল না পারে Pare. না সো মই গভর্নমেন্ট থাকা তো আমি কি পলিটিক্স জয়েন করব না করব সেটা না পলিটিক্স তো অটোমেটিকলি হাকিছে না Acha. So holy be my government thakado it's too early to comment from you on that thing. Holy be kon holy be politics ke if you have the ambition. Nah, don't think that by joining politics you want to earn your pay. Of course. Itu para corruption la rut ko asbe. Hoy. Amila earning karani join kora so itu to society ke progress no kara no na society ke morte ase morai dia ase. Nah. Hoy, Nah. sir. And not only the politicians, even the voters, including the voters. This should be an example for us. I'm not talking about Nagaland, but I'm talking about the entire India, where there is chaos, where there is problems, where there is confusions, because there is visionless leaders. Visionary leaders has already that they policy bal titak na mana. Na. To itu isma ami jabi na jabi election go be politics go na. But my message will be the youths of Nagaland. You are also youth. No, Sorry. forget about me. The youth of Nagaland should get actively involved in politics. Okay. That will be my message. Okay. Khabo karen ni join korbe. Khabo karen join korse to isab prabi pat bibo sida sida bomboy. Hoy. Aro poila zamane te to Old Testament phale to Bible te to loge pap korse loge dishe to. Ori New Testament asle loge pap korse loge deya na na. Olbe ajil 21st generation 2020 te isor be na loge pap korse loge di de. To apni kami to bui khaba lage. Kila manu to kandi asu to. Eto alop humor dal dia asu le na. Hoy, hoy. So itu kan mo government to youth come politics involve korbi hole be enjoy benefit karan join korbi na. Aro progressive mind থাকিব লাগে economic policy থাকিব লাগে social policy থাকিব লাগে responsibility বুকিবলে পাৰা মানুহ থাকিব লাগে আৰু responsibility থাইছে বলে social life তে আগে যাব society to economic ফালে বিবা আগে যাব না আৰু human resource ফালে বিবা আগে লগিনে যাবলে পারে না বলবে so যাইছে commission 15% commission মই সাইন মারব না আমি 1 crore বাজলে 50% commission খাইব এটো কোন কি এগেইনস্ট করা নয় বলে 15% commission খাই দিব 10% মিনিস্টার লা commission খাই দিব আরে ইনকা জয়েন করছিলে এটো পলিটিক্স জয়েন করবি নাগাল্যান্ডে আমি 2023 তে বাসতে বইতে এজেলো খালো না এটা তো খাসে নাগাল তো ইসর আওয়ার দেখান ডিসাইড করব বলে নেক্সট ইলেকশন তো কাছে and if possible you should also contest when I contested for election in 2018 I had only 70 rupees in my pocket what did I have I didn't have Your guts was আমি there. খুবই গাছ লাইন হয় দে বলে it was for a reason আর ইসর ভাই তুমি তাহলে ইচ্ছা থাকছে কোন যাওলে পারাস না তো আমি কি থাকি যোগ থাকা নাই এটা থাকি ইলেকশন যাচ্ছে so I want to encourage us we have 60 seats in Nagaland
The limitation I mean the youth of Nagaland should start taking active role in politics. Good. Me myself, I'm involved in other social activities, whether I am involved in politics or not. Nah, but I want to encourage you. We have so many talented people in Nagaland. We have so many God-fearing people in Nagaland. If needed, television can be election contest ko bisi das debo. Nah, it is too early to comment, but I think this point, which today, 2nd of June 2020, I mean to go to 2023 to reflect over like it. Or a temporary target tracking was our use of Nagaland. 60 constituencies competitive over like I don't mean to say that use of Nagaland ja karan bura kan najar ko alam ho na. But competitive for ho je. Competition time ko lage. And no muscle power should be used, no money power should be used. पैसा नलगा लगे पैसा जोलाई के मधु सुधु करने आमी kan itu contest नकला एते पर आमी kan roadmap बना के तो Nagaland change करने इते आमी kan roadmap बना लगे forget about me contesting election or not. Even if I join politics or not, me myself I'm a social worker. I would love to get involved in society work. Thagi lebi na pagit khale ho lebi na आमी kan public kan को दिदु कासे आवाज थका तक तो लिखे बोले पढ़ा तक तो भावना ईश्वर का दिमाग विजडम दिया तक तो आमी पब्लिक करंट ग्रॉस लेवल जाके ना बस्ती ना जाए भी इंजोर कैपेसिटी लिटिल कैपेसिटी क्या ऐसे तो करो so too early for me to comment whether to contest or not to contest so that is up to God. But no, ठीक है sir, too early to comment whether to contest or not, but I can see that your fans or your followers, they really want you to be on that platform. तान आपने के तो join कर दो मुंजा ऐसे तो तान दिखिए ऐसे and you said आपने वक्त कथा कोई शे कि you are अपने like अपने बिशी छुट्टी वाली दिया I'm 28, no 29 years old. I'm saying one quotation. It's like this: for a good leader, there is no age. A great leader said that. For a good leader, there is no age. So you are a good leader, and अपने निजों के छुट्टी consider न करना. I think more for people, they want you. That is the demand, and I follow as far as I follow you. That is the thing. Okay. Coming back to your point, Yeah. I will say you to age factor na thakat na. I mean, when I went and visited states like Delhi 2017-18 na state there I mean Delhi de jaise Goa de jaise pale jatne what I was so shocked to see was that youths at the age of 18 to 25 years they are taking active role in national level politics. National level politics was there. So then what is the big deal that our Naga people are not coming to that level? Yes, some people are coming, but I want the Naga people to come more. Naga people ko jile Nagaland de thaka manu kasle. Naga manu indigenous be, non-indigenous be. Tade Bangali be aibo, Marwari be aibo, aro khali takan benefit paise Rajasthan de wapas na jabe, Bihar de wapas na jabe, Nagaland garan be kiba korbe. Ito go my suggestion. I mean, no Naga friends can give it to. We do something, we earn something. We also have to give back to the society. Same thing with me myself. If I'm a Sema, if I earn something, if I do something for myself, then I have to give back to my society. So that is how a chain of reaction should take place for a progressive society. So you feel that the talent is here, and if in the politics field, and apni ko anish na. Right. We have so many talented people in Nagaland. It's just that we have to encourage that. Okay. I mean, I'm busy. Kata de hatte bosi jule busy marshal asa koi to ami kan itu isma pin chai bole acha na pin chai sikle ami kan pin tunga bole ami kan encourage korbe we have to show them the road map we have to show them the way aro apni ki knowledge gain korse man kan koi ekdom selfish na apni knowledge gain kora to ami ke kata class 10 jawab exam dete apni ki formula paise to sati gain ke nadi de na ami ki notes banaise to sati ke nadi ko to selfish ase what you know you have to give back to your friends. Then only your friends will also give you more and more points and ideas, right? So, अपनी दो तीन idea बना सी तो itu इसना अभी काम भी तो idea suggestion काम तो क्या ऐसे जाने भी अपने उद्देश्य को भी अपने उद्देश्य में मोई लोगों तो ये लोग का society कारण मिशी काम कर रहे हैं. So itu ऐसे. चलो, thanks for the answers. अच्छा, again coming back to the topic, like, what is your view? अपना view किना सी तो I want to put this question, though it will be a little hard one, but BSL-2 lab itu coronavirus la BSL-2 lab like Dimapur de mahan set corona para to itu apna view itu ki ase itu medical facilities kami ase lack of fund ase itu what is this going on, sir? That is a very complicated issue. I have to reply. See, I was so shocked that Dimapur being the entry point. I'm not saying that Kohima is bad.
Actually, Kavi, this is a viewer question. Yes. The viewer's question. This is a very genuine question. Okay. Kohima capital ase ami respect kora ase de. I give my respect. Capital ha karen so function kora ami nas district alag bhi function kora and I give my huge respect. Holbe ekta short question to Dimapur entry point ase. Railway station ase na. Airport ase. छोटो मोटो होली भी नदी एक ता दंसरी नदी ऐसे चामल पे इतने ब्रिज भी खत्म होने लगे भी ताते जाए ना हमें ले वाले जाए दिले रोडवेज से ऐसे दिमापुर दे से ता पूर्व टैक्सी होली भी पुराना है जिबे दे गवर्नमेंट भी रिलाइज हो गई ता काम भी हरे बस हरे हाश मुश कोरा से ना एदे कैपेसिटी एवरी डे टेस्टिंग भी कमती हुआ से गुना दे चिनाई पर हाकाम की भी बिशी मानु टेस्टिंग पुराना है कुछ हरे ना पर है भी बिशी मानु टेस्टिंग होने के कंप्लेंट भी कुछ आमी वीडियो भी बना जो तुम बाला तो ना तुम बाबा वीडियो बनाई ना खता भी खता है आरो दिया कलकत्ता पर हाकाम भी टेस्टिंग पुराना है अच्छा ये तो बेस के ब्लेम करो ना बरे पॉलिसी मेकर का भी ब्लेम करो लगे अच्छा पॉलिसी मेकर की ऐसे बोले था बाहर एडवाइजर्स रियो के भी डायरेक्ट ब्लेम करो ना बरे ना बोले भी एडवाइजर ठीक ठाक लगे तो और ब्यूरोक्रेट्स kan be itu takan ki totally blame koran no hole be ब्यूरोक्रेट्स kan be tik tak thajule to aji ami kan na unuke chaos problem te gusul takan na ale be never to it's never too late na ki hoise wapas to nai ko ami etia time banai che etia round korina cycle jai che back hand boli no hobo glob to cycle to jai thakul lagale be our health minister Pangyu Shri Pangyu Thong tai bi man sacrifice korna kam kora se beshi respect dia se tai ki be ताइला गुड हेल्थ कारण भी आमी खानी पार्टनर बोर्ड वो होली भी ताइला अथॉरिटी আছে प्रिंसिपल डायरेक्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और आमी खाना हेल्थ मिनिस्टर और इतो पड़े आमी खाना स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स का कोन इंचार्ज আছে इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर्स आमी लेपल हो रिक्वेस्ट हो क्रिटिसाइज करू बोले बे तो जाइसे नाइबो ना बीएसएल लैब दिमापुर तो इमीडिएटली तो रेम अप करना रिसोर्सेस पूरा डाल के ना की मेन प्रोसेस तो तत होय इजिन होय तो बना बोले तो कि माने वायरस ला से डिस्पोजल वेस्ट मैनेजमेंट की कोदा विषय ला बोले बे खत बनाई दी ना दिमापुर दे इमीडिएटली सेट अप कर दिना रेफरल हॉस्पिटल तो एआईएएम्स कोई के तो टेक्नोलॉजी टाइप गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड दे एमओयू बनाई के ना से बे तो ओपीडी सेक्शन ना था कि दिक्कत पास आमी खान दिमापुर दे every day Dimapur Civil Hospital to 500 to kita ba to ami huna pe 800 tak to patient hai koi 10 taka para OPD de 10 taka para OPD de korina na ani tada se president OPD de abi bolo khabo ani be to ko OPD de 10 taka para ki ba kota se na to ete to OPD de to corona virus bana dise hospital freeze de ase president to 10 টাকা করে ট্রিটমেন্ট লে ঢাকা দিতে করতে যাব না আচ্ছা যে দিমাপুর হসপিটাল কইনা 15 বছর তে বানাই না আছে বলবে রেফারেল হসপিটাল ইজ না বিএসএল ল্যাব তো আইবলা আসলে বে আমি এখন গভর্নমেন্ট অফ নাগাল্যান্ড বা ইটু দিতে আর কোয়ারেন্টাইন কোভিড-19 হসপিটাল বানাই দিব লাগে এতে টুরিস্ট প্লেস দিমাপুর লা তো রেলওয়ে স্টেশন ওসতে থাকা তো দিবি কোভিড হসপিটাল বানাই দিছে তো এতো পেশেন্ট বিশন হয় গিয়ে পলিসি ভিজনারি কথা তো আছে দে itu vision thaki na risk investment korna risk investment because more people are coming are going to come back to Nagaland aru they testing kora hone konba individual like Mr. Dr. Pankaj Gupta pra bana to manu corona virus vision thaki kora se ole ba ami khambi to kota na ami khambi speculation to kora se ko bikha se ko testing korle bishi ola ko na eto to pura chinai la ola se na 49 thaka to pura chinai la ase to harena pra ha to I'm not saying that they will get I believe and pray that things does not happen and we are Bangalore pra bhi avla ase Delhi pra bhi avla ase red zone pra bhi avla ase Andhra Pradesh pra bhi check korna hai na kumala to check kurse pare Kolkata la bhi check korna hai kumala to almost sob red zone pra hi ahe ase sob so like red zone orange zone green zone ka asale mein Nagaland to green zone thakise 1 month thaki to eto to pura red zone ko na orange zone asa ami kan bhi confuse ho ja public kan और ये मोदी पर हम कहना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी पर लॉकडाउन तो खोल दी कोसे ना सो द बेस्ट थिंग इज लॉकडाउन तो सॉल्यूशन নহয় কোনো পয়লা করে কি আছে লকডাউন তো সলিউশন নহয় দে কারণ সার্ভাইভাল লা কথা দিতে হয়ে যায় এতে এন্টারপ্রেনার্স কাম বেশি দুঃখ পাছে rent লাউন না one of my own friend he is finding difficult to pay a rent of 90,000 rupees in a month and he is not paid around 3 months rent তাহলে বিজনেস তে তো কত বড় দিব মান কান রেন্ট বিজনেস বনো শিখলে और कत बड़ा सप्लाई चेन है वो रेंट गिवन लवर्स ले सो लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन बट द ओनली सॉल्यूशन इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब सेंटर urban primary health center UPSC বস্তি কলোনি দে ওয়ার্ড তে বিশ্বাস দে দিমাপুর তে বিশ্বাস है तो
पुराना जमाना 5 years आगे दे 3 years आगे दे कुम बात ना ऑफिशियल्स का तो पैसा भी खाई दीजिए जनरेटर भी बिकाई के ना खाई दीजिए ना तो आरटीआई लगा लिए तो विशेष के मोला वो आई एम नॉट सेइंग दैट आरटीआई दाली वाला है आज ला सिचुएशन जे कोरोना वायरस पेंडेमिक आसे आरटीआई भी तो है देख और ये की खाई दीजिए ना those people who have eaten that they should give it back to the Naga society. Yes. Aro government of Nagaland ke depend korne to primary health care sub center aro to UPSC bosti sub division de dhaga kan to kan invest korbe generator date dalbe hospital la bisna dalbe aur doctor nurse kan dhaga kan date malik kan dhaga misa mise kam nokormi na salary pa kan na se na muli pe gadi bi government of Nagaland I want people na muli pe gadi bi kila mane district hospital every district de ekta district hospital dhaga covid-19 hospital bana diji kole na तो मानु काम को प्राइवेट ट्रीटमेंट हुआ वैसा ना था काम तो प्राइवेट हॉस्पिटल से जरूर पड़ना पड़े तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसे फ्री मेडिकल छोटो मोटो दवा खान पाए जाओ पैरासिटामोल पाए जाओ ग्लूकोज पाए जाओ डिलीवरी भी तादी हो जाओ ना पेट बिखाला दवा भी तादी पाए जाओ कुत्ता बीमार हो जाए कुत्ता ला दवा भी पाए जाओ कुत्ता पर कम्युनिटी स्कूल है सब पर कम्युनिटी सब ला दवा भी पाए जाओ तो बस्ती लॉकडाउन आसे ना इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट बोल कितना तो परमिट लोगे बेरा से कोई माती धागा खान तो दिमाग पड़े तो सिविल हॉस्पिटल चेकअप करूले है ना पड़े तो इनका हो सकले कोरोना वायरस स्प्रेड भी हो दे लेकिन ये तो कम्युनिटी रिएक्शन कम्युनिटी की कोई कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ वायरस ना तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओ बोलते तो सब सेंटर में जो सब डिवीजन में जाकर चेकअप कर लेते तो गवर्नमेंट करंट भी वर्कलोड बालो डॉक्टर्स और नर्सेस काम करंट भी वर्कलोड बालो होय तो इतो आसे आई एम नॉट सेइंग दैट डॉक्टर्स और नर्स काम बियास करे सेल दे आसे तखन काम करत ना और तखन किमान दुबासे दिमापुर इंजने इते गरम दिन दे पूरा है तो पीपी लगाबो और नेकिन भी लगा सकु छे और 6-7 hours पीपी लगा सकु छे होय मुंदु लागि आबे हम भी दोनी ना एंड व्हाट दे आर सैक्रिफाइसिंग व्हाट दे आर डूइंग अभी कोली मन था तो गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड तो गवर्नर्स अवार्ड मेडल पाए ना दिदा तिनदा मन के दिदो दुकान कसब दि दिबे गवर्नर्स अवार्ड मेडल एक अवार्ड सेरेमनी कोर्दिन ना कोन फन मैन काम करा से एते दिमापुर नागा स्टूडेंट्स यूनियन इजना रेड क्रॉस सोसाइटी इजना नले कम्युनिटी हेड काम के अवार्ड भी दिबना अवार्ड फंक्शन दामु कोगिना गवर्नर वाइस खतम आपछे we should appreciate it because इनिका इजना सिचुएशन आरो किता हनु नाजिन तो and if we acknowledge them if we acknowledge the work future दा आरो नागालैंड प्रोग्रेसिव होबो तो એટલે भी कम भाग पर से एक्नॉलेज भी न करछले तो कत प्रोग्रेसिव होबो ठीक सेकंड फर्स्ट टाइम हेल्प करो सेकंड टाइम हेल्प करो पब्लिक तो okay one of the viewer he is a fan of yours তাই আপনারা ফ্যান আছে তো তাই এইটো কৈ আছে কি मतलब Mr. Temjan Imna Along, our education minister, and Mr. Benjamin Yefto. তাহান দুজন তো লাইক তাহান সব ভালো কাম করে আসলে তাহান দুজন তো একদম অ্যাবসলিউটলি বেশি ভালো কাম করনা যায় আছে হোয়াট ইজ আপনি কেনা ফিল করে দিও লাইক এজ এ লিডার তাহান কেনা করে আছে বিকজ আমি কইছি দে স্টার্টিং দে Nagaland is unique because we are very good in hospitality uniqueness ekta thake aru eto pore ami kan to unity ekta thake kina ma to unity divide bhi thake na police na tale be I'll just drink this water sure you did it आवाज ना जाने के बोल बोलना ami kan la higher and technical minister Temjan Imna Along I should say brother Temjan Imna Along ami brabe 7-8 साल तक हमको है I respect him अब इधर पड़े अलग-अलग ideology था वो बड़े politics ला तो और भी as a human being as a citizen of Nagaland good work should be acknowledged no matter even if he is black white or whichever political party he is associated with very good sir good work should be appreciated yes similarly बार बेंजामिन আমি তাকে তো একবার লোক পায় না ওরে বে তার কাম তো আমি দেখে থাকে ফেসবুক থেকে কি লিখি আমি কামবে আজকাল সব স্মার্ট বোর্ড রয়েছে পাই থাকে তো গ্রুপস খাতে তো তখন কি কাম করেছে দুটো অ্যাপ্রিশিয়েট করাছে দে এন্ড অ্যাপ্রিশিয়েট করাতে তো তাই এখানে একলা নয় কিনা তাই কিন্তু বিজেপি টপ লিডার আছে একটা তো বিজেওয়াইএম বিজেপি স্টেট ইউথ প্রেসিডেন্ট আছে একটা তো স্টেট প্রেসিডেন্ট আছে তো আলাদা বিজেপি লিডার্স কাম করব লাগে তো নগরা বাল নইলে বি আলাদা করব লাগে আর এই কম্পিটিশন ইজ না করব লাগে এন্ড নট অনলি देम our other political leaders if they can do they can also do নহলে তাহান করব না পারে মন পুরা লাইন করব লাগে মন পুরা লাইন করব লাগে মই হুদা তো তাহান দুজন কিনা করে আছে মই তো আপনি হুদি আছে তাহান আপনি that is their personal life no because as far as I have seen in the social medias and newspapers and print medias I think they are doing a very wonderful job and I appreciate that okay
itu takkan video ki korase ki no itu that doesn't matter. Oi. But what they are doing by helping the society and helping the community, by giving rice, by giving sanitizers, na, hoy, government la kum kita batu takkan la pocket profit korase kita batu government sanction par bhi korase pare no korase ko hai. Maybe what they are doing is highly appreciated. And not only them, other political parties like Congress in other districts, they are also doing a very wonderful job. And political parties like NPF, led by Sri Tiarzle, opposition leader, I came across that his family and his wife, now, but Khalachukune do be news, Nifero be time to be Balkan Kurasawai, Potumbi Balkan Kurase, same thing, Congress leaders in other districts like Kohima, Muhuchu, and then in Dimapur, they have helped in distribution of rice, because I am the witness. ठीक है, तो as we are about to end this interview, अपनी विषय भाल बात होगी just last 1-2 points अपनी क्या रखी है first thing इन्हें अपनी overall एक ता नागालैंड ला मानुहान के youth के एक ता message अपने ला साइड करती हूँ no I will just some more अभी तो आरो अभी आप जो है ठीक है शुरू करें जय ऐसा भी अभी की क्वेश्चन है last question तो मतलब अपनी इन्हें youth खान ये last question नहीं इन्हें अपनी youth खान ये की message खान दिवो मुंजाए इन्हें like farming sector to be अपनी नागालैंड ला मानुहान की इन्हें निचोड़ ला इधर no political discussion इन्हें I'm not yeah your point is very relevant. I'm gonna tell Dimapur there itu naga ke dide important thing. Nagaland de quarantine center ko ina problem they face kara hai. And I appreciate the police department, Nagaland police department led by this I forgot the name. DGP John. Yeah. Sir John. Sir John. Tala team bra logi na itu Ganesh Guri de Dansri par jo Doyapur phale खेक्यो बस्तु वाले इंडस्ट्री को ना तो हेब्रोन जाला रास्ता वाले ताकन की कोशिश गणेश गुरु दे बेसी साल पर जो इंडस्ट्री ला एरिया इंडस्ट्रियल जो तो बन करके लगा तो ताकन रैम अप करके ना तो बार बना तो दिखा से और ताकन हुस करो के अराउंड 400 to 500 to हुस करो से सो इतने दिखे ना बेसी कोशिश पासे तो इतने जिसना क्वारंटाइन सेंटर दे की कोरा से कॉलेजेस काम हाई सेकेंडरी काउंसिल स्कूल काउंसिल सब बोलने के लिए तो अनाथ साल कान पर ये तो ऑब्जेक्शन भी कोटा से अंशु कान पर भी प्रेस लिस्ट कोटा से और नागालैंड पुलिस स्टूडेंट्स यूनियन कान गवर्नमेंट नागालैंड के एप्रूव करना तो क्वारंटाइन सेंटर इंस्टेड ऑफ होशे तो देखा बोले ना पड़ेगा बोले भी इधर लिविंग स्टोन कान इसमें तेज़ो कॉलेज कान इसमें नोरे अलग कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर बना दिशी तो और भी सब जगह पे एकोमोडेट करो ना पड़ो सो इतो इंजना I mean, itu data kita kali polisi itu RTI 2019 ST Yapang day. ST Yapang, one of my friends has filed an RTI in this thing. 2019 they filed project. I was shocked to see that around 223 Department of Planning and Coordination under the state government has sent a huge amount of money to many individuals, institutions, NGOs, societies, tribal law and village organizations for construction of hostel, institution, working women hostels. EMRS. itu क्या समझना? तो सब डिस्ट्रिक्ट है तो बनावल दिशे. And highest to Dimapur और कोहिमा दी बनाई ना से. और other district है entry point Dimapur और कोहिमा से तो. So itu project to 2012 पर लोगी ना 2018-19 तक qua तो by now this thing should be prepared. I don't know whether this is prepared or not, but my appeal will be the government of Nagaland should direct all the deputy commissioners in all the districts. Itu hostel pun tu jaga tu bana भी कोई ना से itu misal 159 crores. Rough figure I have calculated and I don't know whether it's exact amount or not. 159 crore sanction corona से 223 दे. 159 crore तो छोटो मोटो दाम ना होते. ऐसे quarantine दे अमी काम 2 months is not there. Government of Nagaland 30,000 manu दे. खाली 79 crore spend करोले पास. What about this 159 crore? This is a taxpayer money. This is a taxpayer money of the public. I mean, it phone I'm also paying income. I'm not paying income tax, but I'm paying GST. And my non-Naga friends, those are persons in this under different. They are paying income tax. Then I'm also directly or indirectly contributing to that income tax. Yes. We are proud to say that we don't pay income tax, but I'm paying income tax indirectly. And you are also paying income tax indirectly. 30,000 manu Naga manu bahar kam kora to takhan to income tax dia do. Now. तो ताकन तो सामान चुरी काम तो हाई फाई कपड़ा किनको चोरा काम बाहर पकड़ हाई फाई शू भी अभी तो सस्ता लगा सुन ले ना 1000 लगा सुन ले एग्जांपल ना चुली भी काटी के ना सुन ले रूमर ह्यूमर डाल के ना सुन ले बाहर पकड़ तो 2000 3000 ला कपड़ा कुमती ना लगा तो 100 200 ला कपड़ा ना लगा तो ना
Scarf be lagaw bole ta kan hazar laga etu to 70 rupees la scarf as example de humor dal dia asli de. Very nice, So, sir. others, our people, our children working in other states, they are paying income tax, and that money is routed back to Nagaland for development purposes. This is only about planning department. ना हमें तो कोरोना वायरस कोई बल्कि रास्ता तो भी प्रोजेक्ट बना से हमें दिमाग पे पूरा बिराय रास्ता तो बना से इलेक्ट्रिसिटी पे काम करा से पीएचई पे स्कीम में ना से काम करा से ना इलेक्ट्रिसिटी पे हा से खोदा करा ना schemes are coming RD department भी पैसा बना से ना. So what I want to say is that the public of Nagaland should also be vigilant to this kind of corruptions. Corruption ऐसे कारण होने के दे और इधर government of Nagaland दे quarantine करें मन दिक्कत पास में they should compulsory allocate all these things and identify and put our strengths for coming back to Nagaland. मिसा spend करेंगे ना quarantine जगह ना पाएंगे ना हला कुला करने confusion होगा public हम district administration के blame करो public हम chief minister के blame करो direct shortcut method formula apply करोगे ना ना तो क्या मन आमी खान कुंबा आमी शॉक लगा तो बस्ती कॉलोनी तो कुंबा बम्बू बराइंगा कुंबा क्रॉस करेगी ना रास्ता भी बंद कर देगी ना से तो ये तो रास्ता बंद करे उसके लिए पैसा भी ना चलेगा ना आमी को वो सीधा इतने को ये मान सोशल स्टिग्मेटाइजेशन ना ये तो कोरोना वायरस तो कितना है वो ना इसलिए we never know how long it will go. We have to learn to live with this coronavirus. AIDS kan aja man bui khase, leprosy aja man bui khase, na measles aja man bui khase, chickenpox aja man bui khase. तो coronavirus भी same thing असर होय. Contagious is mortality rate भी कम कैसे लेबे आमी खान तो we have to learn to live with this coronavirus. आमी खान तो coronavirus लो दे live करबले जानी को लगे. और social leaders, church leaders, student leaders come to we have to keep on educating our public. Youth la message to pass दे. होय मुझे. Simple method. होय. किमान फेयर साइकोसिस करबो किमान स्टिग्मेटाइजिंग थाकिबो किमान खियोस थाकिबो रुम थाकिबो आमी खान एडमिनिस्ट्रेशन नदिबे जाकरा को थाकिबो गवर्नमेंट नदिबे जाकरा को थाकिबो सॉल्यूशन নাই আৰু सॉल्यूशन নাই সব বড় কন্ডিশন আছে আৰু একটা রিকোয়েস্ট করবেন থাকা তো কোভিড-19 ওয়ার অন দুই কাম কৰাছে না বলবে কাজে হাই কমিউনিটিতে মানুষ দালি কিনা থাকা তো মরম পারা না ভাল মানুহ আৰু বেছি দালিবি আৰু ৰেসপন্সিবল কিনা কল খান আপনি খান তো পাছে আপনি খান কাম কৰা তো একো দিবলে না পারে না ইটস ওকে বেটার ডাউন দিবি কোনে সো এটো মই কবলে মন থাকা তো না হয় মই কবলে মন থাকা তো তাই খান বি কাম কৰা পৰে তাই খান বি আৰু এটো স্ট্রেন্ডিস কাম তো তাই খান এটো অলপ কিবা কৰিলে বেছি ভাল আৰু গভর্নমেন্ট অফ নাগাল্যান্ড বি পয়সা ৰাখি কিনা পাৰ্স দিয়ে খালি নাৰাখি কিনা বেংক তে নাৰাখি কিনা অলপ সেংশন কৰে खाली स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट पर दिया लोग लगी जो बोले स्टेट गवर्नमेंट ला प्रॉपर्टी बिल्डिंग बोले बिका के आमी करना 18000 30000 मानो इम्पोर्टेंट असले इतो 100 crore इम्पोर्टेंट होय दे आमी चीफ मिनिस्टर के तो लास्ट टाइम भी जो कोसे ना और इफ नेसेसरी आमी करना 15000 मानो 15007 spend discount they have applied for one time assistance 10000 crore करना वापस दाइयो कोसे तो वापस नहीं होगा तो दादा तो दादा ना आई जने तो कोन मासना स्टेट गवर्नमेंट काम 10000 निवल थाका तो फट दीदी 2000 इनसा रेजो करना थाका बे कुंबा तो बैंक अकाउंट भी नाही तो खान की भी आइडेंटिफाई करने दीदी तो की कारण बैंक राखी ना से नागालैंड बैंक इमान আছে दिमापुर देखला बैंक एकला 45 प्लस আছে ना SBI पर लगना HDFC पर लगना IDBI पर लगना ICICI पर लगना আমি সার্ভে করছি তো নিজে জানি তো ভেরি গুড আমি সার্ভে করছি তো That's why I told you your points are very clear. SLBC আছে তো স্টেট লেভেল ব্যাংকিং কমিটি আছে তো ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ব্যাংকিং কমিটি আছে তো ইদুকান কি করা আছে headed by the deputy commissioner in every district in the state level is headed and chaired by the chief secretary না তো ইদু আমি স্টেট লেভেল ব্যাংকিং কমিটি কাবি আপনি তো দিমাগ খালি ইদু খালি yes no কইনা yes sir no কইনা দিমাগ স্টেট গভর্নমেন্ট কে দিবি स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्रेसिव दिमाग दिबे इदु सीधा आपन इदु कोन तो प्रॉब्लम होइना से स्ट्रेन डिस्काउंट 2000 मानु इसना ना बाइकला रिजेक्ट होइना थाका दिकाम बि आइडेंटिफाई करना इदु जुन खान तो दिबि बरोबर तो बुखा बरो बासे दाखन कुमा तो गैस पे किनमुल ना पड़ना बासे शरम ना गदा से माके अन तो डाइपर पे किनमुल ना पड़ना बासे ना मोता खान तो फोन पे रिचार्ज करले बि पैसा ना थाइनो बासे ना तो दाइपर पुरा किबा होइसिल कोन रिस्क लो आमी खान लाबे बुदना मासे तो আৰু আমি কিলে এটো আসলে স্টেট লেভেল ব্যাংকিং কমিটি খান এটো পলিসি বনাই কিনা নাগাল্যান্ড কিংগা আমি খান আনএমপ্লয়েড খান মান বিশা হৈ আছে দেখাম তো 2-3 বনা বই যাব আছে if we don't want chaos in Nagaland if we don't want the public to get more frustrated I think this is the right time today I mean first week of April দিবে আমি প্রেস রিলিজ भी বেশি দিছে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি তো একটিভ আছে লিখে ভিডিও भी बनाইছে না তো ওয়ার্নিং দি কিনা থাকা তো 2 months তো লস হইছে
তো লাস্টে হালা করে ডাকলে কিলে হচ্ছে লেট হচ্ছে তো 3 দিন না অ্যাডভান্স করে তো ওয়ার্নিং দিতে আছে তো আমি স্টেট গভর্নমেন্ট ওয়ার্নিং দেওয়া হলে কি হাই বলে আছে দেখে আছে তো so like itu problem nah ini deh kan state level kan bi dukan banking communities kan state government kan lebih bilang na banking sector pa loan dibi ami kan lebih kan nih kalau entrepreneur skills bana bi itu kobo aro rasta bana kan development project kan especially rasta bias deh bar pas deh and I want to encourage the youth of Nagaland to find maximum out in this road sector rasta bias thaga karena ami kan alag district kan kurun na to business opportunity bias to alag department biya hobi bal hobi najin deh hobi road sector jo thik hobo lage tik tak hobo lage আৰু আৰটি ডিপাৰ্টমেণ্ট খান কি কৰিব লাগে এভৰি নাগালেণ্ডে আমি খান পাব্লিক খান ৰেষ্ট কৰিব লাগে শো কোনটো বস্তুতে পইচা আহিব লাগে ডিডাকশ্যন নকৰো ইনকা টাইম দিব লাগে আৰু আমি লাষ্ট টাইম ভিডিঅ' বনাইছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ এইটো মোদী গভৰ্ণমেণ্ট গিবি 10,000 এভৰি হাউচ হোল্ড দিব লাগে কিনা তো আমি খান পাব্লিক খান এইটো ডিমাণ্ড কৰিব লাগে কংগ্ৰেছ খান বা লাষ্ট টাইম ভিডিঅ' বনাইছে আমি খান পাব্লিক খান কি বনাই গৈছে আমি খান বনাইছে না तो इंगा कोरोना वायरस संदे सेंट्रल गवर्नमेंट तो पैसा लगा न होय आसे सेम थिंग स्टेट गवर्नमेंट भी अपन दिमाग लगासले पैसा तो आही जाबो तो ऑटोमेटिकली और वन मोर थिंग इज बेंगलोर डे 10,000 to 15,000 नागा मानो नागालैंड ना पब्लिक नागालैंड को आसे नागास ऑफ अदर स्टेट को नय नागास ऑफ नागालैंड एकला 10 to 15,000 आसे नागास ऑफ अदर स्टेट लास्टले 35,000 to 40,000 आसे तो 3,000 is not नागालैंड दा आइबो आसे 4,000 आइबो आसे रिमेनिंग 10,000 तो आईटी सेक्टर आसे टेक्निकल लाइन आसे बुझ जाबो आसे नागालैंड हाउस ना देखने दिता बासे स्टेट गवर्नमेंट के अपील करो नागालैंड हाउस तो इतो एकता रिक्वेजिशन होली भी करना है तो इमीडिएटली इतो भी सेटअप कर दिसले इतो भी बारो सेंट्रल गवर्नमेंट कान के एप्रेस करना और दिल्ली के कोविल मन थाका तो अदर स्टेट्स स्टूडेंट यूनियन दे हैव गॉट द मनी बट वेयर इज इन नागा स्टूडेंट यूनियन दिल्ली they were not given direct money to the student union leaders so I want to appeal to the government of Nagaland Delhi to the red zone ase beshi bak to student union leaders kam ke DRC पर contact करके ले तो ता खान के डायरेक्ट तो पैसा दिले बेसी बार એટલે मन प्रॉब्लम तो ता खान नहीं सॉल्व करा से अपने नागालैंड हाउस दिया से काम करा होय होबे स्टूडेंट union leaders का तो पैसा ना दिले ता तो contribution 50 rupees 10 টাকা तक करा से আমি दिखा से तो એટલે I am the first hand witness so the government of Nagaland should also come up leaving aside all the ideological differences but help the student union leaders where there is no Nagaland house, to give them additional fund. Additional fund cost there. 2 lakhs there per day. I appreciate the government of Nagaland for giving them 2 lakhs rupees, but additional funds where they can have such, more economic, more money in the pocket, where they can reach out to our Nagaland people who are facing problems in times of emergencies and all these things. And one more thing is, kun ingala situation there, bahar there, ami Nagaland citizen murbo. खाली नागालैंड गवर्नमेंट एकला डिपेंड नगुना ताई कोरोना वायरस अनाइन को लागि नगुगिना डेड बॉडी खान तो गिना आमी जो मति दे स्ट्रांगली टू फाइट करदो लागे एंड फॉर माय पार्ट आई डू दैट बट व्हाट अबाउट यू दिस इज माय बिग क्वेश्चन टू द यूथ ऑफ नागालैंड एंड आमी खान जो मानु बाहर पहुंचले दे आर आवर सन्स एंड डॉटर्स दे शुड बी ब्रॉट बैक टू नागालैंड दे डोंट डू दिस नो मैटर हु वेदर ही इज ब्लैक और व्हाइट और मे बी ही इज फ्रॉम द पोor family or the rich background family their dead body should be brought back to Nagaland so itu ekta ase message and if needed contribution only be korbo public kanba government ba involved na parish dead body ta ani dibo aru ekta ko ase aru waste management every district te corona waste pp kit labo ta kan to hunia to julai dia sa ase ali be to proper waste management thakbo lage aru kinba kone disposal korbo esabe government kan nationalist kan jane egon be edu kan be korbo le bal aru sanitize kura kan na bar out of question ja salbe sanitize kura kan kon ba sanitizer mara to एक दुईटा भिडियो देखिए আমি তো डिस्ट्रिक्ट नाम नकबो হলিবে ছাল হই যাছে না তো স্যানিটাইজার মারা কান তো দেখো লাগাইছ না ভিন্ন লাগাইছে কি লাগাইছে লাগাইছে তো এতো খাইলে মানুষ বিমার হয়ে যাবে পয়সা সাবস্টেন্স আছে তো ওকে তো আমি লঞ্জো বাচ্চা কে দাদা কোয়ারেন্টাইন দেব আই উইল ইনস্টেড স্ল্যাপ দ্যাট পারসন হু ইজ ডুইং দ্যাট আই এম নট সেইং দ্যাট এতো রিভলভ করব কারণ হইরে বাট ইফ মাই সন্স ইন দ্যাট ইজ ট্রিটেড দ্যাট ওয়ে ইন হিউম্যান ওয়ে আই উইল স্ল্যাপ দ্যাট পারসন on humanitarian ground violence is not encouraged but in humanitarian ground slap kara to man mur jaw no do you mean to say that you have got some reports yes that is what I'm saying so hygienic law uporde hoy takan frontliners come kara to bishay pressure ko ase but when there is a sanitizing program sanitization ko adile to hygienic karo lage aur kon sanitize kora je ta modu nakha manu hobo lage reports bhi paase aaj phone call bhi paise modu nakha manu para sanitize karo lage if needed volunteers madhim na nagande nathaka manu asna ke only be bui khela chilo kun be bahar no bodo but it is the responsibility of the district administration and all the districts to create proper awareness hoy kam korasle and I appreciate aur kam kora to ami ko dibo apne isob apni kan ke blessing dibo hoy criticism to thake manu kan backfire to thake
criticize करे और burden भी आपने kan बिशे आसे घुमा बोले भी ना पार में था phone call पर ना बोले भी once ना this is an opportunity for every one of us where this is a testing period for humanity where we can give our best of the best services to the humanity. So these are the points that I want to suggest, and the message to the youth of Nagaland is be responsive. खाली PUBG खेलना ना कोई भी ना कुरान देने के बाद में बाइबल की मेडिटेट करूँ अपने मुस्लिम था कि कुरान पढ़े ना और हिंदू था कि गीता पढ़े और ताकि कि बाइबलिकल प्रिंसिपल्स बाल आसे तो इम्प्लीमेंट करना नागालैंड पानी के सिखा भी ना lack of awareness ना था करने अभी तो प्रॉब्लम दिया आसे तो क्रिश्चियन आसे तो ना क्रिश्चियन आसे ऐसे पार्टनर का आसे ना हो तो in deep knowledge था তো আপনি এটা কইছে কি মানুহ নাথাকা নহয় তো নাগালেণ্ডে মাতিলে যাব তো এনে সাপোজ আপনি কি মাতিলে আপনি যাব না যাব এনে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার কাম কৰিবলৈ হেল্প কৰোঁ से different capacities ते काम करे दे आम्ही क्वारंटाइन ते काम करছি গলে যাই না কাম করছে পিপি লাগাবো বইব না হয় तू दाते खाली 100 মানুষ কি মদত করবে পারতো পরিবে বলা দিমাগ লাগাই না করতে বই না কাম করছি গলে মিটিং করছি গলে 1000 মানুষ কি মদত করলে পারতো হয় তো কোন কোন বেনিফিট আছে তো আমি তো কন্ট্রিবিউশন দেন না अलग খান বি ইনগো করাছে তো সো এভরিবডি ইজ নট কল ফর ওয়ার্কিং ইন দ্য ফ্রন্ট লাইন ওকে यस आई कैन आल्सो डू दैट आई डोंट मीन टू से दैट आई कैन डू गुड आंसर बट कैपेसिटी अलग-अलग আছে তো না कैपेसिटी अलग-अलग है ना वर्किंग स्टाइल भी अलग-अलग আছে और दिमाग भी अलग-अलग इसको दिगे ना भी यूटिलाइज करा अलग स्टाइल আছে I'm not saying that I'm genius or perfect. Of course. But अपनी enjoy तारीख को चला चले पारी तो same thing you guys are coming up with this video Dimapur 24/7 Maybe you bana tumbe kiman mona educate hola say if my points are correct. Yes. So these are the things. Some viewers they are like so happy with your speech and their words. They are saying that like nowadays Mr. Sir Temjan Emna along তাই भी লাইভ আহে ফেসবুক তে তো আপনি আর তাই দেখিলো বুই না আইলে তো বেশি ভালো হবো ಇದು भी লাইক তাহলে এনে খুশি ভালো একটা সাবলে মন যায় আজকাল করোনা ভাইরাস টা মাস না এনজয় করতে বানাই না করবে একটু ওকে আমি দুজন কথা করাতে 5 ফিট ডিসটেন্স আছে হয় নে এন্ড আচ্ছা দেন মই আপনি কি একটা কব আচ্ছা দেন সব টপিক তো হইছে now personally if for my channel Dimapur 24/7 regarding this আপনি আপনার ভিউ কি আছে আপনি কি কিবা কব মন যায় না মহান আপনি মহান চ্যানেল লাগা কিনা দেখি আপনি কিনা it's good unfortunate that Nagaland আমি গান টিভি চ্যানেল থাকা নাই দে আর আমি গান media newspapers come Nagaland Post comes now which they have celebrated 25 years anniversary just 2 years back and Eastern Mirror আছে Nagaland Post আছে Morung Express আছে Nagaland Page আছে আর like Nagaland Express কইনে দিবি ওলা আছে Nagaland Today কইনে দিবি ওলা like নাসনে কি আর like different vernaculars like sim gupta from the Sumi Tirim our community আর সিকে এনাই গুনা গান গান একটা ওলা নাসনে না তো দিনা তাই গান বাসলে বি তাই গান ক পড়ে কম্পিটিশন আছে দিতেলা দিল্লি তে যাইলা আমি গান তো একটা প্রেস কনফারেন্স করছিলা 30-40 monthly media आने तो भाई so same thing this is an encouragement for everyone and अपनी खान की स्पार्क डाल ना ये तो मैसेज मारा दो तो लंबा आ जाओ अब तो अपनी खान ये करा दो अपनी खान रास्ता दिखा कैसे अब न्यूज़पेपर खान में करा से फ्यूचर डे अपनी खान वीडियो डे के बाद तो क्लासेस हो पहले दिखान भी अपनी खान अंडरस्टैंडिंग था भी कोऑर्डिनेट था भी और मीडिया एक्सपीरियंस खान भी कोऑर्डिनेट कर भी दूरदर्शन आ जाए और भी बेसी साल का फंक्शन में करना था कि और भी आजकल तो फंक्शन करना है DPR टीवी अपनी एक तब देखो था DPR টিভি তখন আমি খানা হোম সেক্রেটারি আপনি সিনাপরা এটো লাইভ ইন্টারভিউ আছে আমি বেশি অ্যাপ্রিশিয়েট করা যায় বাট ইনস্টেড অফ হিম other people can also be friend other staffs can also be friend where they can come live different vernaculars like sema angami lotha au itram ko bole pare so Dimapur 24/7 is na আমি খান Dimapur Today भी আছে Dimapur 24/7 भी আছে নহলে তো like different आजकल YouTubers can be show like আছে like brother Shobika very famous and some few guys like Dreams Unlimited kan is na আছে itu kan is na আপনি খান করা তো কম্পিটিশন is na আছে আপনি খান না একজন সুকুন নজলবে বলবে তাই খান भी করবে দিবে আপনি খান भी করবে and if necessary আপনি খান না লাইন পুরো কোন হলবে স্মার্ট হইছে বলে নাগাল্যান্ড টিভি চ্যানেল আনি না তো আমি যে আজ লাইভ ইন্টারভিউ লবলে পারা তো ইন্টারনেট দা আপদা মাসে লিবে লাইভ ইন্টারভিউ লবলে পারা তো কালি প্রসাদ আপনি কান সিএম কি মাদি কিনে ইন্টারভিউ লবলে পারে তো কালি প্রসাদ 60 एमएलएस की भी राखी ना जागरा की करके ना इंटरव्यू लबले पारे तो तो इतु इनशला আপনি কান भी इतु आइडिया दिमाग लाबे खाली इतु पे फोकस नबे और इतु प्रेशर पास है होय स्टार्टिंग तो আপনি কান तो स्ट्रगल्स टू डिफिकल्टीज बेশি লাগে আমি भी আপনি কাन के बिग फैन আছে दे फॉलो करे दे थैंक यू और আপনি কাन ऑफिस खोला भी तो खुशी पास है
আৰু আপুনি ব্লাড ডোনেশ্যন কেম্প কৰে কোনোবা অপাৰেশ্যন কৰা আপুনি পইচা নাথাকিলে আপুনি ডোনেট কৰে কোনোবা বাট খাবলৈ নাপায় আপুনি খেলাই কোনোবা এইটো ফ্লাড ভিক্টিম হৈছিলে আলাক খান্দে আমি আই এম উইটনেছ টু দ্যাট থিং চ' এইটো কৰাটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিবি এণ্ড উইদাউট এনি এক্সপেক্টেশ্যন কৰিবি ঈশ্বৰৰ পৰা আপুনি আমি বেছি ব্লেছ কৰোঁ এণ্ড let this Dimapur 24/7 send a good wave of message to the other northeastern states, other rest of India, and to the world, and to the South Asian countries. That Nagaland is one such state where every communities from every religion coexist with one another, love one another, and we are a state where our land is filled with hospitality, and we have the principles of our own religion, that is Christian, Sikh, Quran, and all these things. And we should invite people to invest in Nagaland through this platform. I believe that this platform can do some kind of productive for us. And for myself, my support will always be there. Though I will not be able to give anything. My support will always be there, morally, and my prayers will be there. Thank you, sir. So yes, as they say that everything comes to an end, I don't want to end this discussion, but our time permit is like this much. So thank you so much for giving us your time, your valuable time, your words, your views, and then I want to ask, that is on a joking note, I'll just say, because my team and my friends, like your fans, they want to know, the one who is taking interview now, me, okay? So am I talking with somewhere in the future chief minister or the future big minister of Nagaland? Am I talking with that? Seriously, are you joking? Okay, so thanks. I'll come back to the point. See, I know from the beginning, my mission is not to become a politician. We want My you to. goal is to be a social worker. In the year 2014, I decided myself to be a social worker. I was offered government job in this thing, backdoor appointment, 2-3 departments. My parents both sold off one land and they purchased me one job. Being honest. My conscience is not really letting me to take that thing in the year 2014-15. So that was a setting trend, and my story came up in newspapers where I struck off all my hair and started doing Equal Channel Motor Shop. Nice. I did my graduation from Dimapur Government College. I completed my BA high secondary, BA graduation in the year 2010-13 batch. And after that, I took up some hospitality courses where I got job offers in other states, and I had planned to go out to other countries. But my goal was, I was inspired by the words of Ashish Sark, where he said that to work for the society is not necessary that you have to take up Echo 47. Yeah. But we have to find solutions to the existing problems. If you are an entrepreneur, create opportunities for the youths. If you are a social worker, do something good for the society. If you're a policy maker, come up with good policy making. Now, so I was inspired by that word, and I had to stay back in Nagaland and took up the opportunity and the work. That is dignity of labor ko gina nataka karan no libe to matapura taklo korshe Google pe chukrobe akagin jumon naga a young graduate naga selling in Equal shop gina Delhi public school aramal bahar de korshe so naga de 1.5 year korshe and we inspire so many people. Just 1 week back, I had a call from one of my old friend from DPS, Delhi Public School student, saying that I still remember the Equal shop. So itu karado see. You might be from the rich background. Bro, Gavi, I'm just interrupting you. One brother, Joshua Su, he is writing as such an amazing person. I miss eating your egg rolls. Oh, he's That's what I'm right. saying. No, not only Chana Moda, Egg Roll Shop, but Chana Moda. Yeah. That was like, it was a good platform for me to showcase, like to help our educate our people by doing this small thing. So what I want to say is that you might be rich, your parents might be rich, or maybe from poor background, middle class, or maybe you might be from the bureaucratic class, but don't depend upon your parents. You have to do something unique, and that's how you have to inspire people. That's how you have to become amazing. Don't make me myself an amazing, but you have to become an amazing brother, yes. Yeah. So coming back to your point of chief minister, see, I don't have ambitions to become a politician or maybe ambitions to become contest for election. Be a social worker, work for the society. When the time comes, We'll see. destiny Allah comes. Thank you. So, but my mission is not to become popular or maybe to get something, but till I am alive and till God gives me the breath to breathe, the air to breathe, to smell, I will keep on continuing to work for my society, for the people of Nagaland, and we will set a
an example in my little capacities, and I will encourage you all to do that same thing. Thank you so And much, sir. One more thing is, whoever becomes the minister or the chief minister or anybody, as I have encouraged in half an hour back, if you happen to become a candidate or contest election, don't contest just for the sake to eat away and to siphon out the public fund. Yes. Loge dede eso dede. Oi. So like, so we kai na public current काम करो बोले, अमेरिकन ले existing problem ना रहे ना, तो जो सब को है मेरा क्या, अगला problem ना. Thank you so much, and we give glory and thanks to God. And one last message will be taking so much time. I want to appreciate. Thanks to Guru Mana se. Ami kan prayer words kan hoy. Prayer words kan bishik partner kora se, fasting kora se. Ami kan bi report pai. Church leaders kan bi bola to church kan bon thajo lebe to open like na praise worship kan bi kora se. I mean that's how ami kan religion pra connect kori ami kan mental stability strong banai. So it is na if there is a chance government by the church kan condition, I believe that revival should take place in Nagaland. Full of fire, revival should take place in Nagaland. And this is the message that I want to say. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir. It was nice talking to you. And yes, we hope that in future also we'll interact more, okay? Personally, yes, I enjoyed this and I hope our viewers also, and they have. The comments are coming, lots of comments, thousands of comments are coming. And they are like supporting your words, they are accepting your words. So thank you so much, sir, and for giving us your time. Let's pray to God that this pandemic gets over and our world becomes beautiful like before and working like before again. Thank you, sir. so much.